See students, this is lesson number 6, refraction of light. Okay, in this lesson we are going to see numericals, and the first numerical, it is given in your textbook, that is the solved example I have taken. Okay, first question, it is given here, the absolute refractive index of water is 1.36. Okay, what is the velocity of light in water? Velocity of light in vacuum, it is given as 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन क्या देखे? तो क्वेश्चन में ये देखे कि हमको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये देखे, तो वो कितना देखे? तो वो है 1.36. फिर और क्या देखे है क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम वो देखे 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड. और हमें क्या ढूंढ के निकालना है? हमें क्वेश्चन में व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, हमको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर ये ढूंढ के निकालना है. लेट अस स्टार्ट आंसर. फर्स्ट स्टेप वी विल राइट गिवन, जो क्वेश्चन में देखे. ओके, दैट वी विल राइट इट एज फर्स्ट गिवन. इट इज गिवन एज refractive index, it is symbolized by n. okay, refractive index of water का है, तो w कहाँ पे लिखना है? यहाँ पे. okay, refractive index of water with respect to, see here another medium, it is given as vacuum, so we will write it here. okay, yes, refractive index of water with respect to vacuum, it is given as 1.36. okay, और फिर से क्या देखे? तो वो देखे वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, वो कितना देखे? तो वो देखे 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड. ओके, दिस बोथ आर गिवन. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट नाउ? टू फाइंड में हमें क्या फाइंड आउट करना है? तो हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर. तो यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके, देन फॉर्मूला. ओके, फॉर्मूला ऑफ, सी हियर वी कैन फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम. ओके, इसका हम फॉर्मूला पुटअप करेंगे. तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम. तो इसका फॉर्मूला बनेगा velocity of vacuum upon velocity of water. okay, this is the formula and solution. okay, now I will solve this solution. Its solution, how it will come? See here, I am writing the step here. Solution. okay, refractive index of water with respect to vacuum, that it is equals to velocity of light in vacuum upon velocity of light in water. okay, I will replace the value here. see, refractive index of water with respect to vacuum कितना देखे? तो वो देखे 1.36. okay, equal to velocity of light in vacuum, वो कितना देखे? तो वो देखे 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड. ओके, फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर देखें क्या? नहीं. ओके, सो आई विल टेक हियर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, दैट इट इज इक्वल्स टू 3 into 10 raised to the power 8. ओके, अपॉन इट इज हियर 1.36. ओके, नाउ लिसन हियर, यहाँ पे 2 डिजिट देखे. ओके, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है. यहाँ पे अगर 2 डिजिट है और पॉइंट का है तो हम इसका डिवीजन इजीली नहीं कर सकते. सिंपल इसमें याद रखना, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स है? तो वो यहाँ पे है 2 डिजिट्स. ओके, 2 डिजिट्स है तो इसलिए इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर में अगर 100 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, तो फिर ये कितना बन जाएगा? 3, ये 300 बन जाएगा. okay students, 300 into 10 raised to the power 8 and 1.36, it will remove and it will become 136. when you will divide, you will get the answer, that it is 2.21 into 10 raised to the power
8. Okay, 10 raised to the power 8, it won't get cancelled. Okay, so we will get the velocity of light in water that it is equal to 2 into 21 into 10 raised to the power 8 meter per second. Okay, this is your answer. Yes, see students, second question, again solved example it is. Second question it is given here, light travels with a velocity 1.5 into 10 raised to the power 8 meter per second in a medium. ओके, एक मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट वो कितने देखे, तो वो देखे 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड. फिर ऑन एंटरिंग सेकेंड मीडियम, ओके, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0.75 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड. In second medium, its velocity it is 0.75 into 10 raised to the power 8 meter per second. What is the refractive index of the second medium with respect to the first medium? Okay, see again once again I will explain. क्या देखे क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम में देखे, तो वो कितना है, वो है 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. और सेकेंड मीडियम में फिर से देखे वेलोसिटी ऑफ लाइट वो देखे 0.75 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड. हमें क्या ढूंढ के निकालना है, तो हमें ढूंढ के निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. लेट अस स्टार्ट. गिवन, ओके, given that it is velocity of light in medium 1. Okay, medium 1. So I will assume it as I will write it as velocity of light in medium 1. Okay, that it is given as 1.5 into 10 raised to the power 8 meter per second. Second, it is given as velocity of light in medium 2. It is given as 0.75 into 10 raised to the power 8 meter per second. To find, we have to find out, to find it is velocity of, it is refractive index. Okay, we have to find out refractive index of the second medium. Of the second medium means 2, you have to write it here. Of the second medium with respect to first medium, that it is not given. So put here question mark. Formula it will come it as formula when we have seen this. Okay, in this we will get it as refractive index of second medium with respect to first medium. Formula it is velocity of light in medium 1 upon velocity of light in medium 2. Okay, solution here it will come it as, see, we will put it as a value, it is given in this. Okay, so refractive index of second medium with respect to first medium, here V1 it is given as 1.5 into 10 raised to the power 8 meter per second upon velocity of light in medium 2, that it is given as 0.75 into 10 raised to the power 8 meter per second. See here, meter per second it gets cancelled. 10 raised to the power 8, 10 raised to the power 8 it gets cancelled. Only what it is remaining here, क्या यहाँ पे बच रहा है, तो वो बचेगा 1.5 upon 0.75. Okay, I will do it here. It will come refractive index of second medium with respect to first medium. It is given here 1.5 upon 0.75. Okay, now only I have solved the first question. और वो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने अभी बताया था कि डिनोमिनेटर में यहाँ पे देखना कि पॉइंट के बाद
कितने डिजिट से, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट से 1 2, ओके। सो इसलिए इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी ऊपर में यहाँ पे एक ही डिजिट है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या, नहीं, या इसे डिवाइड करते वक्त हम दोनों को, इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी हम 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, टू रिमूव द पॉइंट। सो इट विल बिकम 150, okay, and this one it will become as 0.09, it will become only single 75. See, the point is moving here 1 and 2, and here if you are writing here 0, okay, it will come 1, it will, then it will become, point will move here, okay. So 75 ones are 75 twos are, and answer here it is refractive index of second medium with respect to first, it is, answer it is 2. Refractive index of second medium with respect to first medium it is 2, okay, is 2. See the third question, it is from your exercise, okay, solve exercise, and solved exercise it is given here. Question number 3, if the speed of light in a medium is 1.5 into 10 raised to the power 8 meter per second, what is the absolute refractive index of the medium, okay. In given here it is given as speed of light in medium 1 medium it is given here, but the another medium it is not given. दूसरा वाला मीडियम देखे क्या, नहीं। और यहाँ पे क्या क्वेश्चन में पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप मीडियम का निकालो, ओके। सो आई विल स्टार्ट। गिवन speed of light in medium 1, I will assume it as speed of light means here it is velocity of light in medium 1, okay. Otherwise this is the first medium, so you can write it here v, velocity of light in medium 1, otherwise you can write it as velocity of light in medium, okay. It is given here 1.5 into 10 raised to the power 8 meter per second. Second medium we will assume it as velocity of light in vacuum, that always it will be given as 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. To find, we have to find out, what we have to find out? We have to find out refractive index of medium. So refractive index of medium with respect to vacuum it will come, with respect to vacuum, that it is not given. So put here question mark. Formula: refractive index of medium with respect to vacuum, it is given as velocity of light in vacuum upon velocity of light in medium. Solution: replacing the value, okay. Refractive index of medium with respect to vacuum, it is value it is given as 3 into 10 raised to the power 8 meter per second, and velocity of light in medium it is given as 1.5 into 10 raised to the power 8 meter per second. See here, meter per second, it gets cancelled. 10 raised to the power 8, 10 raised to the power 8, it gets cancelled. It will become 3, okay. 3 upon 1.5. Now only I have said यहाँ पे
पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो इसलिए इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे अगर 10 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी हमें 10 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 कितना बन जाएगा, 330 बन जाएगा, और नीचे ये कितना बन जाएगा, ये 15 बन जाएगा। ओके, 15 1 जा 15, 30 it will become 2. So the refractive index we will get it as 2. I will write here refractive index of the medium is 2. See the question number 4. It is given here. If the absolute refractive indices of glass and water are 3/2 and 4/3 respectively, what is the refractive index of glass with respect to water? Here ये क्वेश्चन में क्या देखे, तो ये क्वेश्चन में देखे रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस देखे, वो भी किसके, तो ग्लास और वाटर का, वो दिया गया है 3/2 and 4/3. So we will write it in given में लिखेंगे refractive index of glass. Okay, of glass. Now with respect to we will not take as water with respect to नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि refractive index of glass with respect to water वो हमें ढूंढ के निकालना है, इसलिए with respect to water नहीं लेंगे, उसकी जगह पे हम वैक्यूम लेंगे. ओके, and we will write it as that it is given here. See, refractive index of glass with respect to vacuum, it is formula, it is given here, that it is velocity of light in vacuum upon velocity of light in glass, that it is equal to, जो रेशियो में देखे वो है 3/2. Second, refractive index of water with respect to vacuum, यहाँ पे भी vacuum ही लेंगे, equal to velocity of light in vacuum upon velocity of light in water. Okay, और ये भी देखे हैं 4/3, that it is given here 4/3. To find, what we have to find out? Yes, we have to find refractive index of glass with respect to water. This it is not given. Formula, it is refractive index of glass with respect to water, it is given as velocity of water upon velocity of glass. Velocity of light with velocity of light in glass. Okay, yes. Solution here it will come it as, we will solve this and it will come here, glass respective index of glass with respect to water, it is velocity of light in water upon velocity of light in glass. Both the terms we will multiply with velocity of light in vacuum upon velocity of light in vacuum. Now this one I will do it here. क्या करना है, हमको दोनों भी टर्म्स को velocity of light in vacuum दोनों भी मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, we will multiply both the terms. So it will become as refractive index of glass with respect to water. It will come. Now see here, velocity of light in vacuum, you can move it here. Okay, so we can write it as velocity of light in vacuum upon velocity of light upon glass. Okay, we can write it like this. Yes, into, now this it will become, see here it will become velocity of light in water upon velocity of light in vacuum. Okay, yes, we can replace the value, इनकी value
देखिए yes, here it is given. I will replace the value here. It will come 3/2 और ये कितना बचेगा, ये है देखो, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, तो ये यहाँ पे देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, जिसकी वैल्यू देखिए 4/3, पर जब हम यहाँ पे लिखेंगे ये उल्टा हो जाएगा। ओके, लिखते वक्त हमें कैसे लिखना पड़ेगा, तो हमें लिखना पड़ेगा 3/4, जिसका आंसर कितना आएगा, वो आएगा 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8। इसका आंसर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, इट इज 9/8। सो आई विल राइट हियर refractive index of glass with respect to water, with respect to water is 9/8.